वेलकम टू चाय एंड क्यूरियोसिटी। आज हमारे साथ हैं मनीष कनोजिया, जिनका काम अप्लाइड मैथमेटिक्स ओशनोग्राफी के इंटरसेक्शन पर है। आज हम बात करेंगे उनसे उनके रिसर्च जर्नी की, पीएचडी की, उनकी फंडिंग की रियलिटी की और फ्यूचर करियर पर्सपेक्टिव्स की। तो वेलकम मनीष टू आवर पॉडकास्ट। Thank you for having me. ओके, तो चलिए पहले आपके बारे में कुछ नॉर्मल चीजें जानते हैं, जैसे कि आज तक आपने सबसे वियर्ड क्या खाया है। आज तक मैंने सबसे weird चीज जो खाई होगी, that would be caudal in Ireland. There is a dish which it was a time when I was a non-vegetarian. Now I'm a vegetarian. So a caudal is something that is prepared with all the meats. They are just boiled with some spices, and then you just drink it and eat it. So it's yellow in color. It just looks like vomit. But yeah, that's the most weirdest thing that I've ever eaten. I do have a picture I can show you afterwards. Yeah. नाइस। और आपकी बकेट लिस्ट में ऐसी कोई चीज जो आप अभी करना चाहते हैं। I want to work in different countries. I don't want to uh, stay in one place. I want to work in different parts of the world and work with different researchers. That's one thing that I want to Cool. अगर आप इस करियर में नहीं होते तो क्या कर रहे होते। do. I don't think I was made for anything else. Oh God, can you? I don't think I was made for anything else. I was trained as a researcher, so I think this is the path that I chose from the very beginning, like from my school time as well. So yeah, nothing else, just the research. Yeah, चलिए जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपसे। आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे डेवलप हो। it's a very funny story because when I was doing my undergrad on my masters from University of Delhi, तो उस समय मुझे and my strongest part in mathematics was abstract algebra. Lekin once I started teaching at Ashoka University back in India, at that time I somehow ended up doing an internship at NIT Delhi, जहाँ पे मैंने सबमरीन्स के ऊपर काम किया था कि किस तरीके से वो फ्लो करती हैं. And this basically ignited my interest in oceans. And then I got to know that there is a whole field which is called mathematical oceanography, where people are using applied mathematics, say partial differential equations, to study oceans and ocean flows and predict some different kind of things. So basically, they are using fluid dynamics to study oceans. आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे डेवलप हुआ। So ये बहुत ही फनी स्टोरी है कि किस तरीके से आई एंडेड अप डूइंग मैथमेटिकल ओशनोग्राफी. सो जब मैं अपनी अंडर ग्रेजुएट कर रहा था फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, so I did my undergraduation and post graduation दोनों ही in mathematics, and majority of subjects जो DU में पढ़ाए जाते हैं during your masters or your undergrad was pure mathematical subjects, not applied mathematical subjects. So my strongest part and subject at that time used to be abstract algebra, and I always thought that I'll end up doing a PhD in abstract algebra. But after my masters, I started teaching in Ashoka University to undergrads. उस समय मेरे पास एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आई थी. वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वाज इन एनआईटी दिल्ली, और उस यूनिवर्सिटी उस इंस्टीट्यूट में I was working on the equations of motion of submarines underwater. At that time, I got to know that people are using uh, pure and applied mathematics to study ocean flows, and that field is now called mathematical oceanography, जहाँ पे लोग फ्लूइड डायनेमिक्स को यूज करके किस तरीके से ओशन फ्लो करते हैं, किस तरीके से फिश बायोडाइवर्सिटी विद फ्लोज के साथ मूव करती है, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स, वेव डिसिपेशन, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. So I did that internship, I enjoyed it, and then I ended up doing a PhD. That's another story how So I it met. was accidental. Yeah, it was very accidental. Yeah. Nice. And do you like this accident? Yes. I like it. I am mostly more interested in
प्रॉब्लम्स जो कि हम लोग रियल लाइफ में अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं. लाइक अगर यहाँ पे इतने सारे जिम में ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं. Can we do a mathematical model for that? Can why is there an impact of oceans on our life or biodiversity around it? If recycling could be changed in some factors, how the GDP is related to the plastic waste, say suppose in the ocean. So I am always and I was always interested in using science in the applied world, and that's how I also, like when this opportunity came, I felt very close to this, and that's why I think like it's a good change and it's a good accident basically. नाइस। तो ये स्कूल कॉलेज में कभी इस तरह का सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस हुआ है क्या? आपको कभी ऐसा लगा था तभी कि स्कूल टाइम में कि या किसी ने डिस्कस किया हो कि ऐसा भी एक करियर पर्सपेक्टिव हो Yeah, सकता let's start from where I did my schooling from. क्योंकि so I hail from उत्तराखंड. मैं उत्तराखंड से आता हूँ. मैंने अपनी schooling mostly देहरादून से की है, जहाँ पे I went to a private school, but it was not a very big private school, but just a small private school. वहाँ पे we didn't have much guidance, and I by chance got to know that I can also go to University of Delhi to do my undergrad. है। तो कहाँ से सुना आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में? From one of my cousins. So he did his undergrad from SRCC, and उसने मुझे बताया था कि you can also fail because I was one of the most top scorers in my state in my 10th and my 12th exams. So उसने मुझे बोला कि you are doing well, so you can go to University of Delhi and you will easily get into it. And so I ended up going to take admission in KMC, but there were like some problems. So I ended up in Venkateshwar College in South Campus, and I think you are from there as well. Yes, I am also from. And so we all love Venki. True, Venki Yeah. rocks. Yeah. So I ended up in Venki. I did my undergrad from Venki, and my professors in Venki were very helpful. They were the best professors, best teachers you will ever meet, and I'm still in touch with a lot of them. They guided me after, like, what should I do? Should I go for my masters to NIT or IIT, or should I do it from University of Delhi? And I ended up doing it from Hindu College, University of Delhi, my masters. And then I started teaching in Ashoka University. There I got the opportunity for internship, and then I met my supervisor there. So my supervisor is from India, but he's a full-time professor in Dublin. There's a university called Trinity College Dublin. That's the University of Dublin. And so there I did my PhD. I started my PhD with him. And then I was introduced to my co-supervisor, who is from Woods Hole Oceanographic Institution, and Wow. and yeah, and luckily she's also Indian. So she's from South India, and her name is Amala Mahadevan. She's from Woods Hole Oceanography Institution and MIT. She introduced majorly the ocean parts in my life, and she was the one who taught me a lot about oceans. And then there was another professor at Trinity. He was my committee member, Francis Ludlow. He guided me with so many books on like oceans. So now I read a lot of ocean literature. But Francis and Amala were the people who actually introduced me to the oceans. Sorry, I just forgot your question. What it was? Can you repeat that again? It was about whether your research career path was planned or accidental. Yeah, so it was accidental, but now I'm enjoying it. Yeah. Okay. तो और जानते हैं क्या आपका काम का रियल वर्ल्ड पर इम्पैक्ट है? आप देखते हैं कि रियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्टेड आपके रिसर्च? So हाँ, मेरे काम का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि so basically जो मेरी PhD थी, there I studied underwater volcanoes. So volcanic eruption जो कि हमारे अंडर ओशंस के अंदर होते हैं, मतलब deep beneath in the ocean होते हैं, inside the ocean basically below the sea surface. So अब वो मेजरली होते हैं इन द रिंग ऑफ फायर. अगर लोगों को पता होगा, रिंग ऑफ फायर दैट passes through in the Pacific Ocean, goes through Japan, through Indonesia, and that ring of fire has a lot of volcanoes around it. And there are some volcanoes which are जो उसके oceans के part हैं. So ये volcanic eruptions जब होते हैं, so we were able to do one thing, that we were able to integrate this
ये वाले जो ओशन जो फ्लो ये इरप्शन जनरेट करते हैं टू दी equatorial ocean flow. So the oceanic flow that is in the equatorial region. So there in the ocean there is a big cycle of the ocean flow. We call it the global cycle. I think it's called, so I'm not getting the exact name, but it's called the global cycle, which goes from the North Pole to the South Pole, enters to the Pacific Ocean in the equatorial region, and then again it goes to the North Pole. So this is how the ocean is flowing from north to the south to the central part to the equatorial region, and then again to the north part. उस फ्लो में वी वर एबल टू ऐड इन उस में पूरे कन्वेयर बेल्ट साइकिल में, इट्स कॉल्ड कन्वेयर बेल्ट, उस पूरी कन्वेयर बेल्ट साइकिल में इक्वेटोरियल रीजन पे वी वर एबल टू ऐड द इम्पैक्ट ऑफ ये जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं उनका फ्लो पे क्या इम्पैक्ट होगा. वी वर एबल टू ऐड दैट एंड basically how it is seen in the real world is it will impact El Ninos and La Ninas, and El Nino was very famously recently was very famous. And then again, I should not say this, but during my PhD there was a volcanic eruption in Tonga, जिसकी वजह से बहुत बड़ी सुनामी आई थी, and Tonga was disconnected to the world for a longer time. So I used that as an opportunity. That's why I said I should not say this, but I used it as an opportunity to model the tsunami that are generated by these volcanic eruptions. People work on tsunamis, लोग काम करते हैं, but मेरा काम इस तरीके से different था कि लोग ओशन के अंदर एक स्ट्रैटिफिकेशन होता है. सो अगर आपका जो टॉप लेयर है वो हीटेड होता है एंड देन एज यू गो डाउन इन द ओशन, तो ओशन जो जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करने लगता है. सो उसमें क्या है कि वो दो पार्ट में स्ट्रैटिफाइड हो जाता है, जिसे हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं. अगर वो टेम्परेचर के बेस पे स्ट्रैटिफाइड होता है, अगर वो आपका सैलिनिटी के बेस पे स्ट्रैटिफाइड होता है, तो हम उसको बोलते हैं हेलोक्लाइन. सो मेरा जो काम था उन दोनों स्ट्रैटिफिकेशन को इंक्लूड करके हम लोगों ने सबमरीन वोल्केनिक इरप्शन को मॉडल किया और हमने एनालिटिकल सॉल्यूशन फाइंड किए कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्ट्रैटिफाइड लेयर, बिकॉज ये स्ट्रैटिफाइड लेयर पे भी वेव्स होती हैं. सो उस वेव्स का और जो वेव्स ऑन द टॉप सरफेस होती हैं उन दोनों का बेसिकली क्या होता है, दे बोथ कंबाइन एंड तब आपको एक इम्पैक्ट दिखता है ऑन द फ्री सरफेस. सो वो चीज, when the volcanic eruption in Tonga happened, I looked at the data and I was seeing there is a beating phenomena that is observed. So beating phenomena is when two waves of different frequencies collide and they combine to become one wave. So there are two frequencies that come into the one wave. So वो बीटिंग फिनोमेना मुझे टोंगा के सारे डेटा में दिखाई दे रहा था, बट कोई भी मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसने बीटिंग फिनोमेना प्रेडिक्ट किया. So at that time I said there must be a stratification. So that's why we were able to model it. And then what we were able to see is because of this beating phenomena, waves were able to travel at a very long distance. So this is another impact of my work. But apart from this, I have done few other works like say the plastic waste कैसे manage हो सकती है oceans के अंदर, how you can relate that to the GDP of a country, and then how can countries manage that plastic waste in the oceans as well. Oh, nice, very interesting Yeah. work. बट जैसे कि बहुत साइंटिफिक है, अगर हमारी जो साइंस से कनेक्टेड नहीं है जो इतना डीपली, Yeah, अगर उस ऑडियंस को जानना हो तो मैथमेटिक्स थ्योरीज को रियलिटी में अप्लाई करना डिफिकल्ट है क्या? नहीं, इट्स जस्ट दैट हमें इस तरीके से इंडिया में पढ़ाया नहीं जाता है यूजुअली. हम लोगों को, वी आर वेरी बुक बेस्ड इन इंडिया. हम लोगों को बता दिया जाता है क्योंकि टेन थीटा है. आई ऑलवेज सी मीम्स ऑन इंटरनेट इंस्टाग्राम की मैंने आज तक टेन थीटा यूज नहीं किया, मैंने आज तक कॉस थीटा यूज नहीं किया. यू कैन सी दोस थिंग्स बिकॉज क्या होता है स्कूल में आपको बोल दिया जाता है कि अच्छा ये चार क्वेश्चंस हैं और लास्ट 10 years में इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, आप उसी को उठा के पढ़ लो और हो जाएगा. But I was not like that. I was a bit inquisitive since the time I was in my school. And so, one thing, like one basic example that I can give you right now, and I'm actually using it, and my boss at Herion was uh, able to understand that as well. But it's like a bit different. Like, say, suppose you have cos theta. Cos theta similarity gives you how similar two things can be, you know. So you have two vectors, vector A and vector B. You find dot product of two vectors, vector A dot vector B, that is equals to norm of vector A into norm of vector B into cos theta. So you get cos theta equals to vector A dot vector B divided by the norm of two vectors. Now if that value turns out to be 0, now or turns out to be 1, or it will stay between 0 and 1.
So you can see the similarity between two things on the basis of that. एंड हम लोग स्कूल में बहुत देखते हैं कि हम लोग चीज़ों को मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रखा जा सकता है, वेक्टर के फॉर्म में कैसे रखा जा सकता है. सो और अगर कोई मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा घुस चुका है तो उसे पता होगा कि वेक्टर्स, मैट्रिक्स, फंक्शंस, यू कैन ऑल जस्ट गेट एवरीथिंग फ्रॉम एनीथिंग एनीवेयर. सो इस तरीके से देखा जा सकता है. सो हम लोगों को उस तरीके से सोचने पे मजबूर किया नहीं जा सकता, किया करते नहीं है स्कूल में. और इस वजह से लोगों को मैथ्स पसंद नहीं आती. तो लोग बोलते हैं कि मैंने तो आज तक tan थीटा यूज नहीं किया, मैंने तो आज तक थीटा यूज नहीं किया. बट हम लोग को सिखाया नहीं जाता है इस सबका तरीके से. सबसे बड़ा डर ही मैथ्स होता सब हाँ. बट वंस यू स्टार्ट डूइंग मैथमेटिक्स, अगर आप एक बार लग जाते हो करने एंड आप एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हो, यू गेट द पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो कि बहुत डिफिकल्ट है विद टाइम. आज के टाइम में when someone is saying something, कोई कुछ बोल रहा है और आप उसको अपनी आंखों के आगे इमेजिन कर सकते हो. दैट व्हाट यू गेट व्हेन यू डू रियल मैथमेटिक्स इन कॉलेज. सो क्या ये कह सकते हैं कि आप दुनिया को नंबर्स पर देखते हैं? I do look at things with numbers, because when I was in school, there is this fundamental theorem of arithmetic. I don't know if you know about it, Yeah. where each and every number can be written as a product of prime numbers. True. So it tells you that everything is made up of prime numbers, or any number in the world. So they are the building blocks. So in similar way in chemistry they have things which build up everything. Similar way in biology you have things which build up everything, but they all fall down and they all can be studied with respect to prime numbers. But there is a very bad thing that we don't know, the occurrence of prime numbers, like that series we have not found yet, which is quite sad, but we will not be able to. That's another thing for another time. आपके अर्ली करियर स्टेज पर अब तक सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? सबसे बड़ी लर्निंग ये रहेगी, इज जस्ट दैट आपको एक हॉबी होनी चाहिए. यू नीड टू हैव वन हॉबी. Anybody can do research. I'm not saying people can do research. You can be a good researcher, you can be a bad researcher, but you will be a researcher. But you need to have an hobby apart from your research, because and you need to go out, meet people, then you will be able to see real world people, real world problems, and then you will be able to handle your own research in that format. There are problems which I have worked on in my career research based on talking to people. So one thing that anybody, if in India they are watching your thing and they want to do PhD and they want to come abroad, I would just tell them that just have a hobby. Either start going to play badminton, go swimming, go gym. You will meet different people who don't think like you. So you will know that how people think and how you can present your work. When they will ask you कि आप करते क्या हो. So अगर आपको आपका काम किसी ऐसे इंसान को समझाना हो जिसको कुछ अता पता नहीं है कि आप क्या करते हो, साइंस क्या है, किस तरीके से, उसको बेसिक नॉलेज है. एंड इन यूरोप लोगों को बहुत बेसिक नॉलेज होती है साइंस की. सो आप उनको समझा सकते हो. सो it will be very helpful for you to present your work in your papers as well. So have a hobby, get a hobby, do something apart from research when you're coming abroad. It helps you socially in your research as well as mentally. या बैलेंस रखने में हेल्प करती है. Yeah. दैट्स ट्रू. रिसर्च में फंडिंग कितनी क्रिटिकल है? Funding is the most important thing, and there are ethics in it. जो मुझे लगता है जैसे कि there are places which will fund you, but then when you are sending your paper out, it should be available to read to anybody because you are funding it on the public fund. That's one thing. I don't want to go into that, but funding is very important. If anybody who wants to go abroad or even want to do PhD in India, अगर आप बाहर भी आना चाहते हो, आप इंडिया में भी रहना चाहते हो, आपके पास तभी आपको पीएचडी ज्वाइन करना चाहिए जब आपके पास फंडिंग हो. आई नो कि बहुत सारे लोग हैं जो लिटरेचर में पीएचडी करते हैं और वो लोन लेके पीएचडी करते हैं. आई माई सेल्फ हैव फ्रेंड्स जो डब्लिन में पीएचडी कर रहे थे. दे वर पेइंग 15K euros a year as fees and they were taking loans. And so there is no point अगर आप पीएचडी करने जा रहे हो और आप डेट में भी जा रहे हो, बिकॉज पीएचडी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है. सो यू नीड टू हैव फंडिंग बिकॉज पीएचडी एक ऐसा टाइम है जब आपको जहाँ पे आप सिर्फ अपने करियर में स्ट्रगल नहीं करते, आप मेंटली भी स्ट्रगल करते हो. एंड दिस गोइंग इनटू डेट इज अनदर मेंटल स्ट्रगल व्हिच यू डोंट वांट इन योर पीएचडी. सो जस्ट गो फॉर अ पीएचडी जहाँ पे आपको फंडिंग मिले, एंड फंडिंग इज वेरी क्रिटिकल. वैसे जहाँ तक मुझे पता है तो
दो तरह की फंडिंग्स होती है, एक प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, जैसे मोस्टली लोगों को जब अब्रॉड पीएचडी मिलती है तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, और एक फेलोशिप बेस्ड भी होती है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है। फेलोशिप, आपको क्या लगता है दोनों में क्या डिफरेंस है, एंड विच इज मोर गुड टू हैव? So I think the project based funding is very good because you get an independent, it's not an independent research experience in project based funding, but it's not bounding. अगर आप, I also came on an Indian government scholarship to Ireland, जहाँ पे उस समय जो स्कॉलरशिप मुझे मिली थी उसमें ये क्राइटेरिया नहीं था कि दैट यू हैव टू रिटर्न बैक टू इंडिया. कौन सी स्कॉलरशिप? The scholarship is from the, it's called National Overseas Scholarship. It's by the Minister of Social Justice and Empowerment. लेकिन उस समय जब when I was applying for the scholarship, there was no criteria that you have to return to India. But 2023 they changed the criteria that you have to return to India as soon as you finish your course. So you do 1 year masters or you do 3 year or 4 year PhD, you have to go back to India. जो कि फेलोशिप में एक ये कमी रहती है that you have to follow their rules if you are getting the fellowship, and there are so many other cuts in between जब आपको फेलोशिप मिलती है. लेकिन अगर आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग होती है, obviously you have to work on the project thing, and that is also pass, like you can also pass that. You do some work, but your PhD thesis come out to be something very different than what the project demanded. So project based funding is something that I feel is more nice and helpful for people, like if they want to go for a PhD. पर अगर जैसे बहुत फंडिंग्स खत्म हो जाती है, प्रोजेक्ट 3 साल का है या 4 साल का है, और पीएचडी उतने टाइम में डेफिनेटली नहीं हो पाती है, बहुत सारे रीजंस की वजह से, कभी डाटा अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो उस टाइम पे फंडिंग इनसिक्योरिटी को मेंटली कैसे हैंडल किया जा सकता है? मतलब तब आप बहुत प्रेशराइज फील करते हैं कि पीएचडी भी टाइम पे खत्म करना है, फंड्स खत्म हो रहे हैं। आई थिंक उस समय पे आपके पास एक अच्छा सुपरवाइजर होना बहुत जरूरी है. हार्ड टू फाइंड. या मेरी फंडिंग वाज, माय फंडिंग वाज फॉर 3 years. मैंने अपनी पीएचडी 3 years 4 months में कंप्लीट की थी, बट माय सुपरवाइजर gave me the extra funding for 4 months. uh, though the project that he was funding me from, I wrote that project with him, so I helped him writing that project. But अच्छा supervisor hona is very important, and always pressure your university, your institute to give you extra funding. They have the resources, they just don't know how to allocate it. They just, I would just say that you will always find a way to get it done. Just don't take so much stress that funding कहाँ से आएगी. At the end of the day, you have to go to your supervisor. आप उनको जाके बोलो मेरे पास नहीं है, मेरे घर में, I don't come from a very rich family, I can't sustain, I can't do this, can't do that. And अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है, then taking a loan from European bank will be bit easier अगर आप यूरोप में हो. और आप इंडिया से भी लोन ले रहे हो, then that will be very expensive क्योंकि आप रुपीस में लोन लोगे और आप खर्च यूरोस में करोगे, so that will be very expensive. पर आपको लगता है कि लोन लेकर पीएचडी करना इज अ गुड? No, just take loan for 4 months if it's if you have 4 months left and you are, you don't have funding, but everybody will fund you for 4 months. But don't do a PhD and if you don't have resources. Okay, so now we have changed our location. हम बाहर से अंदर आ गए because बाहर बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था. So we'll continue shooting things here now. अच्छा मनीष, ये बताइए कि एकेडमिया और इंडस्ट्री या पॉलिसी, अगर रियलिस्टिक ऑप्शंस देखें करियर के हिसाब से, आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा बेहतर है और किसकी प्रोग्रेस दिखती है आगे, किस फील्ड? अगर हम बात करें इस चीज़ में तो एज इफ लाइक हम लोग जिस माहौल में बड़े हुए हैं और जिस तरीके से हमने लोगों को देखा है, तो हम ऑब्वियसली एवरीबडी, हर कोई यही सोचेगा कि जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं दे आर एबल टू अर्न अ बिट मोर देन व्हाट हम लोग जो उसमें एकेडमिक्स में कमाते हैं. तो ऑब्वियसली हर किसी को ये लगा कि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा करियर है. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो हमेशा से एकेडेमिया में जाना चाहते थे, लेकिन अब वो अपना करियर चेंज करके वो लोग उसमें जाना चाह रहे हैं, अब इंडस्ट्री में जा रहे हैं. बिकॉज द प्रायोरिटीज एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ वो चेंज होती हैं. बट मुझे ये लगता है कि आपको वही काम करना चाहिए जो कि आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलनेस दे, चाहे आप इंडस्ट्री में हो चाहे आप एकेडेमिया में हो. इफ़ यू लव द जॉब यू आर डूइंग, देन यू विल एबल टू एक्सेल इन द जॉब.
अगर आप नहीं, आपको पसंद नहीं आ रहा और आप सुबह उठ के, मेरी एक टीचर थे स्कूल में, इंग्लिश टीचर, वो मुझे ये बोलती थी कि हमेशा वही जॉब करनी चाहिए जिसमें सुबह उठ के आपको ऐसा ना लगे कि शिट मुझे आज जॉब पे जाना है। सो हमेशा सुबह उठ के आपको ऐसा लगना चाहिए ओके आई हैव टू गो टू द वर्क, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओ गॉड मुझे जॉब पे जाना है, क्यों जाना है। सो सो इसलिए मैं तो एकेडेमिया में ही रहूँगा बिकॉज आई लाइक टू डू रिसर्च, आई लाइक टू टीच। सो बट इन टर्म्स ऑफ से इफ यू वांट टू सर्व पब्लिक और आपको ये चीज़ें पसंद है तो पॉलिसी में जाना इज़ अ वेरी गुड थिंग। इफ़ यू वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, और हर किसी की फैमिली सिचुएशन अलग होती है, there are people जिनके पास नहीं होता a lot of money in their initial stage of life. Even I didn't had, we didn't had, but for some people who, someone who didn't had that, वो उनको बहुत ऐसा लगता है कि ओ आई शुड हैव दिस मच मनी। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आयरलैंड में जिनके पास नहीं था रिसोर्सेज, नाउ दे आर ग्रोइंग अप एंड दे थिंक दैट दे शुड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि जो आपके पास नहीं था आपको वही चाहिए होता है। किसी को नॉलेज चाहिए होती है, किसी को मनी चाहिए होती है। सो दैट इज, सो आई फील लाइक इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट फॉर मी academia is something that I would like to stay in because I also told you initially कि I am not meant for any other job, I can only do science. पर जैसा कि आपका काम इंटरडिसिप्लिनरी है, हम्म। मैथमेटिक्स ओशन इंटीग्रेटेड है, आपको क्या लगता है कि ये आगे आने वाले टाइम में इस तरह का काम इंटीग्रेटेड वर्क्स एडवांटेज है या एक कंफ्यूजन होगा? मतलब लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे आगे जाकर, या ये एक और कंफ्यूजिंग साइंस क्रिएट करेगा? I think it will be more helpful, but then everything has a boon and a bane. मतलब हर किसी की एक पॉजिटिव चीज़ भी होती है हर चीज़ में, और एक नेगेटिव चीज़ भी होती है। अब जैसे अब इफ़ यू टॉक अबाउट एआई, अगर हम लोग आज एआई की बात करें, तो जितने भी एआई मॉडल हैं दे आर ट्रेन्ड ऑन डेटा। लेकिन उस डेटा में सोशल चीज, सोशल फैक्टर लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर दैट टू अंडरस्टैंड दैट सोशल फैक्टर एज अ मैथमेटिशियन आई कैन से आई डोंट अंडरस्टैंड सो मच society so much, people so much, but if I have a socialist in my group or somebody from sociology, they will be able to understand people in a more different way. They can look at the data and they can tell you why something is happening on this. सो अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूंगा कि बेसिक साइंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस इज बेस्ड ऑन बेसिक साइंस। जब तक आपके पास बेसिक रिजल्ट नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। बेसिक साइंस नहीं होगी तो आपको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस भी नहीं कर सकते। So you need every aspect of the society to grow. Every aspect of either it's literature or sociology or social science or science or chemistry or physics, biology, everything will and should grow together. आने वाले 10 सालों में इस फील्ड की डिमांड आपको कैसी दिखती है? आपको क्या लगता है आने वाले 10 years में I कैसा होगा? I I can only say कि मेरे एक जो प्रोफेसर थे, मेरे जो सुपरवाइजर थे, I was doing one course because अब जब आप पीएचडी करते हो आपको कुछ क्रेडिट्स करने पड़ते हैं। So I was doing this course called Simulations for Geophysical Modeling, and उस कोर्स को पढ़ाते पढ़ाते वो मुझे बोल रहे थे कि मनीष, और टू एवरीबडी इन द क्लास, कि आने वाले टाइम में जो नोबेल प्राइज दिया जाएगा इन एनी से सपोज इन फिजिक्स और एनी समथिंग लाइक दैट, किसी भी साइंसेस में, so it will be given to somebody who's working on oceans. Oh, Because oceans ऐसे हैं जो हमें नहीं पता उनके बारे में बहुत कुछ, and people are using, you will not even realize कि आज लोग quantum computing यूज कर रहे हैं to study oceans. So because we don't know much, we know more about space but we don't know about oceans. एक तो कोड थी जो मैंने अपनी थीसिस में लिखी थी कि ये ओशंस जो हैं हमारे सबसे बड़े म्यूजियम हैं और हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वी आर जस्ट नाउ डिस्कवरिंग इट। that is true. I mean, this is the least explored area. या मेंटर्स ने आपकी जर्नी में क्या रोल प्ले किया? मतलब आप, मैंने देखा अभी तक आप बहुत बार अपने मेंटर्स की बात को ला रहे हैं, उनकी सेइंग्स अभी भी आपको याद है। आपको क्या लगता है उनका कैसा रोल रहा है आपकी पीएचडी जर्नी या बाकी जर्नी में? Yeah, so I come from a family जहाँ पे people were not that educated. Obviously, some of them went to college, did basic graduation or some stuff like that. किसी ने डिप्लोमा किया था, but I was the first person doing science in my family, and I didn't had anybody to
who can actually guide me to do anything, like what you can do after your school, when you finish school. So us case may, obviously one of my cousin helped me to go to Delhi University, but after going to Delhi University, my professors helped me a lot to what should I do, what my potential is, because you don't see your potential until unless your mentors show you that, oh, you are capable of doing this, आप ये कर सकते हो, you have the potential to do this. So my, starting from my university, there was a professor, Nisha Bora, there was another professor, Shakuntala Vadva, and then my masters, there was another professor, Pratima Rai. And so they are all female, and my mother also had played a very important role in our education, because my mother is somebody who always stressed on our education कि आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, that is how you are going to change your life. एंड देन आने के बाद मेरे सुपरवाइजर एंड मेरी को सुपरवाइजर एंड मेरे कमिटी मेंबर्स, दे ऑल हेल्प मी अ लॉट. एंड यू ओनली गेट टू नो योर रियल पोटेंशियल व्हेन the right people guide you to that. So obviously mentors play a very big role, not just for me but for everybody, I feel like. कॉन्फ्रेंसेस नेटवर्क्स क्यों जरूरी है? आपको क्यों लगता है कि ये सारी चीज़ें एकेडमिया में ज़रूरी हैं? मोस्टली लोग जब जाते हैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने तो ये कहते हैं यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अटेंड करके आ गए, बस इतना नेटवर्किंग नहीं हुआ। बट आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे लोगों को कि अगर कॉन्फ्रेंसेस के लिए जा रहे हैं या नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है और कैसे करें, मतलब क्या ट्रिक्स हैं? Yeah, I have the same experience. मैं भी I have attended कुछ थोड़ी बहुत international conferences. One I attended in Tokyo. That was the biggest conference. It's like a conference mela for applied mathematicians. कौन It was सी थी? International Congress in Industrial and Applied Mathematics, ICIAMA, in 2023. I attended that in Tokyo. लेकिन you don't really talk a lot, and also at that time मैं PhD student था, so there is also a biasness among the researchers, जो कि PhD students को इतना favor नहीं किया जाता है. They always talk to each other, जो who are big scientists, who are big researchers. लेकिन I've also gone to कुछ summer schools में जहाँ के my experience to that summer school was not good. But I feel like it's very important to talk to people from research, to talk to people who are researchers, not just researchers from your field, as I was saying, but you need researchers from other fields as well. And because I do interdisciplinary research, so I always feel like I should talk to somebody who is working specifically in geography, geology, or somebody who's working in sociology or literature or social sciences, because there are projects that I'm now doing which are part of social sciences as well. सो मुझे हमेशा से ये लगता है कि यू नीड टू मेक कॉन्टैक्ट थ्रू योर थिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन दैट टाइम सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अगर अभी आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें यू लुक एट द पीपल हु आर ऑलवेज हु हैव वर्कड ऑन इट. यू कैन एनी वे ऑलवेज कॉन्टैक्ट देम. आप 10 लोगों को कॉन्टैक्ट करते हो, आपको एक कॉन्टैक्ट वापस आता है. जस्ट जस्ट लाइक से, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो, application of PhD in India is different than applying for PhD in abroad. You may email people abroad and then they reply back to you, take your interview, and then you look for the funding and everything happens. So I feel like आप लोगों को approach करो on what problem you are doing right now. If they are interested, they will definitely, and researchers are always looking for people to talk to and collaborate with. So conferences are not the only way, और समर स्कूल्स आर नॉट द ओनली वे वेयर यू कैन मीट अदर रिसर्चर्स और उनसे जाके आप बात कर रहे हो, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, नहीं. But you can, at any point of time, I actually ended up talking to a lot of researchers in New Zealand when I was doing my PhD. Though I didn't collaborate with them, but I was sharing my work with them because they were working on the volcanoes as well. So it was a very different experience. But you always reach out to people who are working in the same field, or somebody who will be working, who is or who is from another background but working on something very related to you. Like one of my committee member was a historian, and he used to look at the historic eruptions in the oceans, somewhere in volcanic eruptions, and I collaborated with him to write a project basically. So they will submit the project very soon. So I feel like आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं. So collaboration के लिए या ग्रुप बनाने के लिए या कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए, you don't really have to go to a conference, I feel like. And I also feel like most of the conferences should be online, but that's a topic for another day, I would say. Yes, that's true. बट अर्ली करियर प्रोफेशनल्स को नेटवर्किंग से डर तो लगता है, मतलब बहुत उतना ज़्यादा. कॉन्फिडेंस नहीं Yeah, होता आप I जब know that. जाते हो. Yeah.
तो ऐसी पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई ट्रिक जो आप बोल बताना चाहोगे अर्ली करियर्स को, सो दैट वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट ना फील करें, जाके लोगों से बात कर सके, Yeah. मतलब थोड़ा इजी वे आउट, Yeah, क्योंकि whenever you are approaching someone, don't approach them with your professor, or don't approach them with your guide, or don't approach with somebody who is a other higher researcher than you, because people would definitely try to prefer talking to them as compared to you for one thing. makes And then sense. you will say something and they will say something, and then it will come down to if you people are differing. So suppose there was one thing that when I went to Japan, मेरे प्रोफेसर के साथ कोई बात करता और कोई मेरे साथ बात करता, तो वी बोथ वर देयर, और मेरे प्रोफेसर ने कुछ बोला एंड जो मैंने बोला वो उसका काफ़ी ऑपोजिट था, बट द गुड थिंग वाज दैट पर्सन वाज aware of what we were talking. So he said, like, what I said was making more sense as compared to what my professor said. But nothing bad, because my professor has a very diverse field, so he can't concentrate on every other thing that we are working on. So, but just don't approach them with your other researchers. Just try to approach people independently and talk about your research with them. Yeah. आजकल लोग बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं कि रिसर्च में जाएं या इंडस्ट्री में जाएं, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पर इस कंफ्यूजन का वजह क्या है? आपको क्या लगता है कंफ्यूजन क्यों रेस हुई, क्यों एकेडमिया सडनली थोड़ा सा इंटरेस्ट डिक्रीज होता जा रहा है, लोग और पीपल आर मोर इन्फ्लुएंस्ड टुवर्ड्स द इंडस्ट्री? Yeah, because researchers are not paid well. Okay. एक बहुत बुरी चीज़ है, when I was doing my PhD in Trinity College Dublin, so though I was paid by government of India, लेकिन जो लोगों को यूरोपियन रिसर्च स्कॉलरशिप भी मिल रही थी, that was so low that even they couldn't uh, finish a month. So you pay at least 70% of your salary or stipend into the for the rent, and then you're just left with 30% of what your stipend is, and 30% you can't just run a life or run a family if you have a family. So researchers are not paid well in most of the countries. In some countries they are paid well, but if you look at the money that people get in industry, which is too much. A lot of people I know, they just go and they start, they after finishing their PhD, a lot of people who in physics who I know from Trinity, they started working as a data scientist. उन्होंने data scientist का job लेना शुरू कर दिया after doing their PhD. So because they were getting good money of what they would have gotten in a postdoc as compared to what they were getting in industry as a data scientist. Other things, दूसरी चीज मुझे लगती है कि आज these days everybody is going for a PhD. It has become a trend. It's just like a CA now. Like there was a time when in India everybody was doing a chartered accountant course. So now everybody is doing a PhD, and then people don't realize that they go and take admission in any XYZ university in India and do a PhD, which doesn't contribute much. So obviously contribution should not be looked in terms of like what how many new things you have given, but a scientific contribution is a scientific contribution. So some people don't really realize that, and they just take admission, and then there are so many fake institutes in India as well, as we all know, that लोगों को बस PhD मिल जाती है. And we always hear the news that PhDs जिनके पास है उन्होंने apply किया for a job which is for 12th pass, but you don't know where their PhD is from. That is not from a very good institute. That's why they are not able to get a job that a PhD gets, that a PhD deserves. That's why they apply for a low-lying job. So there is a difference there. तो आपको लगता है ये वजह है जो बेसिकली लोग बोलते हैं कि पीएचडी करके भी जॉब नहीं मिलता, या पीएचडी करके भी इतना पैसा नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत है इस फील्ड में? एकेडेमिया में अनसर्टेनिटी बहुत है, एंड इन institutes, universities have to mend their ways in terms of giving people full time contracts. लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अब्रॉड भी हैं और इंडिया में भी हैं जो लोगों को फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स देते ही नहीं हैं. People are assistant professors as ad hoc for a long period of time. और जो कि अब इतनी अनसर्टिनिटी अगर आपकी जॉब में होगी तो आप नहीं करना चाहोगे ना. एंड दे जस्ट सेव मनी फॉर द समर टाइम. उस टाइम पे दे डोंट पे दोज रिसर्चर्स एंड देन दे स्टार्ट देयर कॉन्ट्रैक्ट अगेन after the summer vacation passes. So they are saving money for few months, but then you're destroying somebody's career for those few months. So those things are bad. I'm not saying this happens in every university, but it happens in most of the universities. So उस चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो
एज अ सोसाइटी हम लोग आगे तभी बढ़ते हैं जब हर एस्पेक्ट आगे बढ़ेगा. सो हमें अपना हमें अपने आप को सुधारना है, तो प्लस यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स को भी अपना, इवन द गवर्नमेंट्स लाइक हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल, जो कि एक चीज़ है जो हमें चेंज करनी पड़ेगी. ऐसी कोई चीज़ है जो अब तक आपको लगता है कि मतलब स्कूलिंग से लेके आपने पीएचडी पूरी कर लिया है, कंप्लीट हो गई, नाउ यू आर अ डॉक्टर मनीष कनौजिया, पर इस पूरी जर्नी के दौरान अगर आपको कभी ऐसा लगा है काश मुझे ये पहले पता होता? काश मुझे ये पहले पता होता कि आप आईआईटी में जाके भी अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड कर सकते हो. Though I don't like IITs anymore, though, but like if I would have known, I would have gone into an IIT. If I would have known about ISI, CMI at that point of time when I was passing my class 12, I didn't knew these institutes existed. Well, these are quite famous one. Yeah, but I didn't knew because I'm from a very small town and I didn't had anybody in my family who could tell me about all these things. Nobody around me could tell me. I got to know about Delhi University from one of my cousins. So I didn't know about ISI, I didn't know about CMI, I didn't know about NISERS, ISERS. I only knew about IIT. And IIT भी मुझे यही पता था कि you can go as a to do engineering, and I didn't want to do engineering. So yeah, अगर मुझे लाइफ में उस समय पे कुछ गाइडेंस मिले तो आई वुड हैव डन माय अंडरग्रेड फ्रॉम ISI, बट देन आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग बिकॉज इट्स व्हाट इट इज, आई एम डूइंग फाइन राइट नाउ. यस, आपको लगता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स की कमी है जहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस स्पेशली इंडिया में और स्मॉल टाउन्स में नहीं है? अगर आप बिग सिटीज में हैं तो आपके पास एक्सपोजर ज़्यादा है, यू कॉन्टेक्ट विद मोर पीपल एंड कम टू नो मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट. Yeah, so there is obviously a lack of guidance, uh, a lack of knowledge, not only among the parents, because obviously हर किसी के parents उस बैकग्राउंड से, एकेडमिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं. इफ यू गो टू अ स्मॉल टाउन इन इंडिया, स्मॉल सिटी इन इंडिया, there would be parents who are just 12th pass, or there would be a mother who was forced to marry at when she was 23, so wasn't able to do a lot of things. So उस गाइडेंस के लिए हम लोगों को स्कूल की तरफ देखना पड़ता है, बट देन इन स्कूल्स देयर आर नो टीचर्स. कितने मेरे जब व्हेन आई वाज इन स्कूल आई डिडंट हैड अ फिजिक्स टीचर इन माय क्लास 12th. हमारे को कोई फिजिक्स नहीं पढ़ाया, हम लोगों ने बाहर से पढ़ा है, ट्यूशन से पढ़ा है. हमारी स्कूल ने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ाया था स्कूल में क्लास 12th में फिजिक्स का. सो यू कैन सी द डिफरेंस देयर. सो ये डिफरेंस जो है जहाँ पे लोगों के पास, इवन आई वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल, सो हमारे पास प्रॉपर फिजिक्स का टीचर ना होना इज अ वेरी बिग कंसर्न. कि आप 12th क्लास के बच्चे को बाहर भेज रहे हो पढ़ने के लिए एंड यू डोंट हैव like no, you have not taught them physics properly in school. So ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ हो गई जो नहीं है. प्लस उन टीचर्स को, हमारी गवर्नमेंट को कुछ प्रोग्राम्स रन करने चाहिए ताकि लोग टीचर्स जो आजकल तो, क्योंकि अब स्कूल वाले उठा के किसी को भी टीचर बना देते हैं. आपको पता है, आप इंडिया से हैं, मैं भी इंडिया से हूँ. एनीबडी कैन गो एंड बिकम अ टीचर दीज डेज इन इंडिया. एंड हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए हमें इन टीचर्स को गाइड करना पड़ेगा कि भाई क्या ऑप्शंस आप बता सकते हो कि आपके बच्चे के पास हैं जब आपके पास 12th में. this guidance system of universities in abroad, as we see in different Netflix series और everywhere in US, कि भाई लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करूं when I am passing my school, हाई स्कूल. तो वो इंडिया में क्यों नहीं है? मोस्टली स्कूल्स में, मेरे स्कूल में वो नहीं था. nobody was there to guide me. Yeah, it is there, I think, but in limited. In limited ones. Yeah. हमारे मेरे स्कूल में नहीं था. No So idea. I didn't really had that. So वो सिस्टम क्यों हर स्कूल में होना चाहिए. इवन हमारे स्कूल में तो मेंटल हेल्थ पे भी केयर नहीं किया जाता. आई थिंक को किसी भी मोस्टली इंडियन स्कूल्स में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम केयर किया जाता होगा. Exactly. I think in India it's a least concern. Least of their concern, which is should be not, but yeah. So it is true, that is reality. आपको अपने काम में सबसे ज्यादा पैशन किस चीज से मिलता है? मतलब क्या है जो आपको, I could see you're so enthusiastic about your work, about your field. What makes that? I just loved mathematics since when I was in school. My way of studying mathematics was very different than a lot of people. I used to just sit. I don't used to study mathematics every day. मैं एक दिन बैठता था संडे को मैथ्स की किताब लेके, and I used to just read it. I love reading. I still read. I used to just read it and I used to visualize things. So, but I was able to visualize things more properly when I came to
undergrad and started doing a lot of mathematics. But the other thing that gives me passion is using mathematics to solve different problems. That gives me so much satisfaction. Plus, the one thing that I do when I am so bored, I just like to sit idle. I don't like to do anything. Don't I'm not even on my phone. I'm not even on television. I'm not on anything. I'm not reading. I just sit. I just sit idle. I don't do anything, and I just think about what I was doing, what I could have done separately or differently in the model that I once generated. Or I like to go for a walk, and when I walk, I just like to think about things that I'm working on. So that keeps me going, basically. तो आज जब आप उत्तराखंड से आए बाहर बिग सिटीज में, वो आप अपने Delhi. दिल्ली या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, Hmm. तो वो आपको आपकी बिल्कुल ऑनेस्ट रहा है कि कितना डिफिकल्ट होता है अपने कंफर्ट जोन से निकलना, या ऐसे Hmm. जहाँ पर आईआईटीज के बारे में ना पता Yeah. हो, या ऐसे छोटे प्लेसेस से आकर आप बड़े सिटी में एजुकेशन लेना, वाज दैट वेरी डिफिकल्ट अपना कंफर्ट जोन छोड़ना? I always knew that if I have to do something, I have to move out. Like मेरे को अपना घर तो छोड़ना है, because Uttarakhand there was nothing there that could like I can reach somewhere from there. Obviously now they have different universities, which is good, but it is very difficult because you move to a different city altogether, but still you are in your own country, so you know the country, you know the process, you know everything, that how if things go south, you can just always take a cab and go back home anywhere in India you are. So that's one thing. But when you move abroad, you leave everything behind. You leave everything behind, your family, your friends, everything, and you start from scratch. That is something that gets you more lonely at times. And there are several studies which talk about people suffering mentally because of the loneliness when and specifically the international students when they shift abroad. So obviously leaving everything behind and shifted to a new city or a new country, you feel lonely, you feel disconnected from the world because you are in a very different country where you don't know anything. So that's why initially I was saying that you need to have a hobby, you should have a hobby, that so that you can go out and your social circle can increase when you go to a new country. And there are people which are nice, like you people helped me a lot when I came to Germany. I didn't get that help when I went to Ireland initially. So this is like very, like different. Like it's always a new experience when you go to a new country or a new city, but is just make sure that you go out and meet people, because staying alone can basically get you nowhere, and you can always be lonely, and that will help you that will add mental stress to already stressed life that you will have in academia. Yes, that's a very nice idea. Thank you so Yeah, much, Manish, no आज problem. हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, अपनी लाइफ It was एक्सपीरियंसेस शेयर pleasure. करने के लिए। ये थी एक और कहानी डिग्री से आगे की। अगर आपको ये एपिसोड यूजफुल लगा, इसे शेयर कीजिए और चाय एंड क्यूरियोसिटी के साथ जुड़े रहिए।